Welcome all to the e-learning class of course 9, that is Assessment for Learning. Myself, Dr. R.N. Lenka of Chanakya College of Education. Today's topic is Bloom's Taxonomy of Learning Objectives or Bloom's Taxonomy of Learning Domains. हम सबको पता है लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और ये एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया, ये एक बहुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न डोमेन में हम आलोचना कर सकते हैं। डोमेन का मतलब ये है, ह्यूमन माइंड हैज 3 लेवल्स: नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड स्किल लेवल। अकॉर्डिंगली बेंजामिन एस ब्लूम B.S. ब्लूम in 1956 और उनके सहयोगियों के साथ लर्निंग डोमेन का एक क्लासिफिकेशन बताए हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग डोमेन्स या टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। As we know, 3 prominent domains of learning are cognitive domain, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक; affective domain, that is dealing with attitudes, emotions, feelings; भावात्मक क्षेत्रीय भावात्मक डोमेन। लास्ट वन इज साइकोमोटर या स्किल डोमेन। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें ज़्यादातर रिकॉल और रिकॉग्निशन को प्राधान्य देते हैं हम, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। पर्टिकुलरली ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ या बौद्धिक क्षमताओं के साथ जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन का हम बात करें तो पहले आता है दैट इज नॉलेज, ज्ञान। व्हाट इज नॉलेज? Knowledge is the recall data or information. It is the ability to recall data or information. It is the ability of the learner to recall data or information. Recalling ability and recognition ability. Very simple. The most simplest form of behavior under cognitive domain is knowledge. For example, recite a poem, recite a policy, quote prices, reciting the safety rules. These are some of the examples of knowledge domain or knowledge subdomain of cognitive domain of learning. The action verbs or the verbs that deal with knowledge domain are define, describe, identify, know, label, list, match, name, outline, recall, recognize, reproduce, select, state. These are the some of the verbs. ये कुछ क्रियाएं हैं जिसको व्यवहार करते हुए
हम नॉलेज डोमेन का ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म करिकुलम, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब टू प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई टू elements of assessment, list 3 characteristics of formative assessment. These are some of the examples dealing with knowledge domain or knowledge objective of cognitive domain of learning. Next, comprehension, both. Simply it is the understanding objective. That means the learner is able to understand the meaning, translation or interpolation or interpretation of the instructions or state the problem in own words. That is, while it is better than knowledge, comprehension is always better than knowledge. That means understanding is always better than knowledge. This is higher order कॉग्निटिव डोमेन, सब डोमेन। कुछ एग्जाम्पल का बात कर सकते हैं हम लोग। रीराइट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट राइटिंग, एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स द परफॉर्मिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, ट्रांसलेट an equation into a computer spreadsheet. While there is understanding, there is better learning. Keywords, कुछ प्रमुख शब्द या क्रियाएं जिसको व्यवहार करते हुए हम लोग ये बोधात्मक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य का प्रयोग या लिख सकते हैं। वो है कॉम्प्रेहेंड, कॉन्वर्ट, डिफेंड, डिस्टिंग्विश, एस्टिमेट, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, जनरलाइज, गिव एग्जाम्पल्स, पैराफ्रेज, प्रेडिक्ट, रीराइट, समराइज, ट्रांसलेट्स एट्सेट्रा। ये सब कर सकता है जब कोई भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी ये सब क्रियाओं को प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रहेंशन ऑब्जेक्टिव मानते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। BS ब्लूम और उनके टीम के हिसाब से एप्लीकेशन इज हायर ऑर्डर सब डोमेन in comparison to knowledge and understanding. It is the ability to use a concept in a new situation or apply what is learnt in the classroom into life situations or workplaces. The most important concern is application, applying the acquired knowledge into real situations. For example, use a manual to calculate an employee's vacation time, apply laws of statistics to evaluate reliability of a written test. The keywords for this subdomain are apply, change, compute, construct, demonstrate, discover, manipulate, modify, operate, predict, prepare, produce, show, solve, etc. Practical use. This focuses on practical use of acquired knowledge into real life situations. वास्तव जीवन में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करना इस शिक्षण उद्देश्य का महत्व है। नेक्स्ट इज एनालिसिस, विश्लेषण। एनालिसिस द एबिलिटी to separate material or concepts into component parts so that its organizational structure can be understood. Hence it distinguishes facts from inferences. एनालिसिस करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर को या कोई भी लर्निंग स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पार्ट करके उसको समझना पड़ता है। For example, troubleshoot a piece of equipment by using logical deduction, recognize local fallacies in reasoning, gathering information from a department. These are some of the, in science and mathematics also we may cite
Additional examples in science and mathematics, analysis is a must, analyzing each and every part to reach at conclusion or inference. ये एनालिसिस सब डोमेन के लिए कुछ क्रियाएं या कुछ एक्शन वर्ब्स का बात हम करें, जैसे कि द चाइल्ड इज एबल टू एनालाइज, ब्रेक डाउन, कंपेयर, कंट्रास्ट, डायग्राम, deconstruct, differentiate, discriminate, distinguish, identify, illustrate, infer, outline, select, separate. जब एनालिसिस सब डोमेन का मास्टरी हो जाता है विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को, वो ये सब करने के लिए समर्थ होता है। कुछ ब्रेक डाउन कर लेगा, कुछ कंपेयर कंट्रास्ट कर लेगा, डिफरेंशिएट करेगा, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है, डिस्टिंग्विश भी कर सकता है, सेपरेट भी कर पाएगा फ्रॉम वन एलिमेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एलिमेंट। ये सब करने के लिए एनालिसिस का ही प्रयोग करना चाहिए। वो एनालिसिस इज इन दिस सेंस, एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस एनालिसिस पार्ट पार्ट करते हुए कंक्लूजन में पहुंचना पड़ता है, लेकिन सिंथेसिस इज बिल्डिंग ए स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। सिंथेसाइज संश्लेषणात्मक व्यवहार, पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए होल। कुछ पार्ट को जोड़ के एक होल बनाते हुए एक न्यू स्ट्रक्चर पर आना, ये सिंथेसिस है। क्रिएटिंग ए न्यू मीनिंग और न्यू स्ट्रक्चर, ये सिंथेसिस का बात है। Synthesis objective of learning. For example, write a company operations or process manual. Design a machine to perform a specific task. Integrate training from several sources to solve a problem. Revise and process to improve the outcome of learning. Some of the examples we may say. Keywords or action verbs used for synthesis subdomain are categorize, combine, comply, compose, create, devise, design, explain, generate, modify, organize, reconstruct, relate, reorganize, rewrite, summarize. These are the some of the important action verbs used for synthesis subdomain of cognitive domain of learning. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। इवैल्यूएशन, इट इज नथिंग, इट इज मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ एन आइडिया और मटेरियल्स। इट इज द क्वांटिटेटिव असेसमेंट प्लस क्वालिटेटिव असेसमेंट along with वैल्यू जजमेंट। सो इवैल्यूएशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सतत या निरंतर मूल्यांकन भी हो सकता है, व्यापक मूल्यांकन भी हो सकता है। इट में बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट में बी समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन का हम बात करें, इवैल्यूएशन इज द टॉप सब डोमेन इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, हायर द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, explain and justify a new budget. These are the examples. Keywords used for evaluation component are appraise, compare, conclude, contrast, criticize, defend, describe, discriminate, evaluate, explain, interpret, justify, relate, summarize. These are the action verbs used for evaluation as a subdomain of cognitive domain of learning. Now let's summarize. The cognitive domain of learning includes 6 major subdomains, that is knowledge, ज्ञानात्मक, comprehension, बोधात्मक, that is understanding, application, प्रयोगात्मक, कुछ प्रयोग करके दिखाना, analysis, विश्लेषण करते हुए, synthesis, संश्लेषण करते हुए, देन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं। जब ये छः चीज़ को एक विद्यार्थी या अधिगमकर्ता करने में समर्थ हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि ही इज एबल टू एक्वायर द
cognitive domain of learning. This is, with this, I think these are some of the important points or tips that will help you to understand the cognitive domain of learning objectives, and it is highlighted by Benjamin S. Bloom. Thanks.